Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 2. The chapter name is The Kings and Kingdoms, and this chapter is related to our history portion. And in the previous class, we have done three major dynasties of South Indian dynasty. First is Rashtrakutas, the second one is Yadavas of Devgiri, the third one is Chalukyas of Kalyani. And in this class, we will cover the rest of the dynasties except the Cholas dynasty. We will not discuss that dynasty in this class. So first dynasty is Kakatiyas of Warengal. So first of all we have to see the areas, location कहाँ पर है. So Kakatiyas dynasty यहाँ पर है. Kakatiyas dynasty is situated in the southern area and it lay between गोदावरी एंड कृष्णा रिवर. गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में है एंड इसका टाइम पीरियड है 12th to 13th century. So Marco Polo visited this kingdom काकतियाज ऑफ वोरेंगल. मार्को पोलो एक टूरिस्ट था. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो बाहर से टूरिस्ट आते थे वो ट्रैवलॉग्स लिखते थे. सो मार्को पोलो इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट. ही वांटेड टू विजिट इंडिया एंड ही हैव विजिटेड दिस किंगडम ऑल्सो. नाउ दिस किंगडम फॉलोज शिवा. भगवान शिव की ये फॉलो करते थे एंड ये लोग संस्कृत एंड तेलुगु के बहुत ही ज़्यादा पैट्रनाइज थे. उन लैंग्वेजेस को ये फॉलो करते थे. द सुल्तान कॉन्कर्ड देम इन द अर्ली ऑफ 14th सेंचुरी. जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, उस सल्तनत ने इस एरिया को, इस डायनेस्टी को अपने अंडर कर लिया वॉर के दौरान, मतलब जीत लिया. सो एक बार रिवाइज करेंगे. गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में है 12th to 13th century. And who visited this kingdom? Marco Polo and the other followers of Shiva. They patronized Sanskrit and Telugu language. Now, Hoysalas of Dvarsamudra. Now, they ruled कर्नाटका. उनका पर्टिकुलर एरिया अगर हम बोले तो ये रहा कर्नाटका. एंड द पावरफुल किंगडम ऑफ दिस डायनेस्टी इज़ विष्णुवर्धन. एंड इस डायनेस्टी को भी किस सल्तनत ने अपने अंडर कर लिया था? दिल्ली सल्तनत. तो अगर क्वेश्चन बने किस किस डायनेस्टी को दिल्ली सल्तनत ने इन दिस साउथ इंडियन डायनेस्टीज को अंडर किया? सो द आंसर इज काकतियाज डायनेस्टी एंड होयसलास डायनेस्टी. Now the next dynasty is the Pallavas dynasty. The two major rulers of this dynasty is Mahendra Varman first and Narasimha Varman first. First यहाँ पर छिप गया है. So the capital of this dynasty is Kanchipuram. Kanchipuram, as you can see here, यहाँ पर तो कांची है. So the capital of Pallavas dynasty is Kanchipuram. Two major rulers of this dynasty, Mahendra Varman, Narasimha Varman, and the dynasty of this ruler are the patron of art and architecture. उन्हें बहुत ही ज़्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर पसंद था. They are fond of art and architecture. So the example of their art and architectures are these two. The Rath Temple at Mahabalipuram and Kailasnath Temple at Kachi. ये रथ टेम्पल है. ये एक ही पत्थर से बना हुआ है. इसको कार्व करके, उसको तराश के बनाया गया है. ये रथ टेम्पल है जो कि कहाँ सिचुएटेड है? महाबलीपुरम में. एंड अगर हम बात करें कैलाशनाथ टेम्पल की, कैलाशनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन कांची. Here you can see, here is Kanchi. So now we will move forward to a next topic next ruler, that is the Pandyas ruler. This dynasty ruled over the region of Madurai. Okay, so यहाँ पर मदुरई मेंशन नहीं किया गया है. मदुरई मेंशन है इस वाले पार्ट में. ये देखिए, as you can see here is मदुरई. सो इस पूरे पार्ट में किस डायनेस्टी का रूल चलता था? इस पूरे पार्ट में चलता था पांड्या डायनेस्टी का रूल. एंड मदुरई इज़ द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग हब था. जिस तरीके से आज का कोटा है, नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ हब थी लर्निंग के लिए. सो द पांड्या डायनेस्टी हब थी, मतलब मदुरई उस टाइम पर इम्पोर्टेंट सेंटर था लर्निंग के लिए. एंड दिस डायनेस्टी डिक्लाइंड इन 14th century. सो अगर हम देखें इन सभी डायनेस्टी की रूलिंग पीरियड, तो लास्ट हम लोग अभी हमने देखा है पांड्या डायनेस्टी की, जिसने 14th सेंचुरी तक रूल किया है. अगर हम देखें काकतियाज डायनेस्टी ऑल्सो 14th सेंचुरी, एंड होयसलास एंड पल्लवास डायनेस्टी
जो डिक्लाइन है वो इसमें मेंशन नहीं है. So we are revising the Hoysalas, the ruling area, Karnataka, powerful kingdom, powerful king Vishnuvardhan. This dynasty was declined by the Delhi Sultanate. Next is Pallava dynasty, two major rulers, Mahendravarman, Narasimhavarman. Capital is Kanchipuram, patron of art and architecture. The two examples of their patronism of art and architecture are Rath Temple. Here is Rath Temple and Kailasnath Temple at Kanchi. Pandyas around Madurai. Here is Madurai, and the important center of learning is Madurai. And this dynasty declined in 14th century. And in the next class, we will discuss the Cholas dynasty in deeply. Thank you.